Okay. And today's main focus will be on all possible types of errors in statistics. We will not be restricting ourselves to standard error. We will not be restricting ourselves to type 1 or type 2 error. Let me see, there are some other people are still joining. Just a minute. Ayush Chaudhary, yes. Ayush Chaudhary, have you joined? Yes, yes, yes. Hmm. Okay, let's get started. So today we are working on all possible types of errors in statistics. Okay, so how this will be effective and how this will save you from all the possible mistakes. So let's talk about errors in statistics. क्लास का पहला एक दो मिनट नंबर मुश्किल है. This error is not those who have just joined. We are not talking about standard error. Today we are not talking about any different type of error, but different type of application oriented error, which type of distribution to apply, and when not to apply that particular distribution, where a particular testing is applicable, where a wrong test you apply and I get a wrong hypothesis and you get a wrong answer. Sometimes you apply a wrong lemma as well, sometimes a wrong inequality. So is there a way out of finding all those things? Answer is yes. I have made three notes on this thing. Sorry, two notes on this thing, that how to identify which type of statistical distribution to apply. And the second thing, how to decide what is the hypothesis you can apply every time. Okay, so these are the two things we will be doing. So let's get started. So the first is acceptance and rejection. We'll start with a normal error, which you guys know. Okay, that's a type 1 and type 2. This error is very much people know it. If you don't know it, I'm just telling you. Either you accept something which should be rejected. So accept a wrong thing, or you reject a value which should be accepted, isn't it?
So this is type 1 and type 2 error, two types of error. The biggest problem of type 1 and type 2 error is, if anyone want to do it in this box format, so right value, wrong value, accept and reject. If the right value is accepted, no error. If the right value is rejected, there is an error. If the wrong value is accepted, there is an error. And if the wrong value is rejected, there is no error. Okay. Now, my point is quite different. Is that which one is more damaging? In the entire analysis of entire statistics, which one is more damaging? You guess. Tell me. Accepting the wrong one. Accepting the wrong one. This is a normal convention of this thing. Because if you miss out a value, there is a chance that the value is, obviously both are equally damaging. But in case you accept a wrong value into your analysis, so the analysis get a diverse result. So rejecting correct value is less erroneous than accepting wrong value. Okay, so this is called level of error. Now, it's quite seems like the verdict of the person very recently in West Bengal murder case and the rape case of the doctor. So they think that it is not quite unusual enough to go for a life, or rather say a death warrant or a black warrant. Okay, so maybe the level of rape should be much more innovative in order to give them a life sentence. Okay, not so unusual for them. That's like a usual. हर रोज ही होता है. क्या फर्क पड़ता है? Okay, so this is quite our judgmental judgment system, which is very judgmental. Okay, now going to the next part. So this is the first. Next, another mistake I've seen people are doing it. একটা ইয়ের বানিয়ে করেছিল মনে আছে ভুলগুলোর ওপরে 40টা আলাদা আলাদা করে হলো তারপর আবার ওটাকে এক্সপ্যান্ড করো ওটা আমাকে একবার পাঠাও ওটা করেছিলাম I may give you one PDF on that also. So that is not explained PDF, but a basic PDF is being given over there. So that will be useful in later usage as well. Okay. So first error is clear. Second error is the CLT error. What is the CLT error? Central limit theorem. Can I apply every time central limit theorem everywhere? Obviously, no, we can't. So the question comes where we can apply it. The central limit theorem, where we can apply it. Is it like an approximation? What do you believe? Is it like an approximation? Places where you can apply central limit theorem and places where you can't apply central limit theorem, although it seems like it should be applied. কি মনে হয় স্টার্ট করা আছে তো টুকটাক টুকটাক তো করেছে फर्स्ट इन ये कहते हैं कि स्टैट में कहता है लार्ज सैंपल सो n greater than equal to 30 so in case of large sample so what is the meaning of the extremely large sample answer it is not defined. There's only a basic vague definition of n greater than equal to 30. That's the large, and anything less than that is a not that large, it's like a small one. But extra large or very large, so somewhere it goes till infinity. Somewhere in form more than 30, it goes to infinity. So this is a big range we are dealing with. So that is one. So when the sample size is sufficiently large, then you apply. तो मतलब 31 के लिए भी जो applicable होगा 9465 के लिए भी शायद वो applicable हो जाए. Okay, so this is not well defined, and that is the case we apply in many of the scenarios in statistics as well.
Okay. Is it possible that I can sum the randomness of the variables? Answer is yes, very much possible. For example, I have a random variable, so like e to the power 10, then the value is 10, then the value is minus 673, then the value is 22222 to the power 22. These are all random values, and I have another set. So which one is more random? Obviously, this one is more random. No, sorry, this one is more random. This one is less random. So now, সবাই অ্যাড হয়েছে এসছে? আজকে তো চাইছে নাকি? আজকে এক্ষুন দাঁড়িয়েছে? পরীকে দিয়ে দাও 40 উইথ কালার দিয়ে দাও আর 4। হ্যাঁ, those who have just joined, today we are discussing all possible errors in statistics. Okay, and it's a brief to advanced full analysis I'm trying to give. And as usual, while the session is going on, you can ask me any questions as well. Okay. And the number for that is 90623951123. Okay. In this number, you can add. So I said that अभी सवाल जो ये हो रहा है कि can this randomness be added? Answer is very much they can be added. All this randomness are additive in nature. So if I have this much, it's still random. If I have these values, so the entire thing are 8 values, so the much more random. Okay. So in this kind of cases also CLT can be applied. So if you have two random variables and taking the sum and find the ultimate one, so they are also CLT applicable. But where CLT will not be applicable, I've got one question. Yeah. So CLT का एक सवाल है जो अभी पूछा गया सर n for large sample how large? So अभी शायद you have just joined. So n greater than equal to 30, that is called a sufficiently large sample in statistics. That's why we can apply this thing. Okay. One place where you cannot apply is for Cauchy distribution. कभी भी इसमें नहीं दे सकते Cauchy distribution. Can anyone tell me why Cauchy distribution में CLT कभी भी applicable नहीं है? Why it is not applicable? Any idea? Cauchy distribution is actually heavily tailed. Okay, heavily tailed. What is this word mean? What is the conceptual meaning in statistics of a heavily tailed distribution? सर कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, और कुछ? जिसकी वजह से सीएलटी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। हेवीली टेल्ड इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? जैसे मान लीजिए इफ देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड, okay, we do that na likelihood ratio test. So if there's a very high likelihood of extreme values, okay, if there's a high likelihood of extreme values, then the problem occurs. High likelihood of extreme values, okay, or anything. It may be higher movements are infinite. In that case also it's problematic. And very high variability. ये तीन केसेस, yeah.
So these are the perfect three cases where we are talking about a heavily tailed data. अगर इसका पूंछ बड़ा हो गया. Next. Sometimes some of the inequalities and all we also incorporate in a different way. हम लोग डायरेक्टली सवाल भी पूछ सकते हैं. Those who feel shy enough, यहाँ पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं. ऑनलाइन क्लास का कुछ तो फायदा मिले. ओके. सर इसका रिकॉर्डेड कहाँ मिलेगा? क्लास एंड होने के बाद. क्लास होने के बाद व्हाट्सएप करना, आपको डायरेक्टली पोर्टल में ही अपलोड हो जाएगा. D7 या D8 में अपलोड होता है. आपके पास पोर्टल एक्सेस नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट लिंक भी भेजते हैं. ठीक है, दोनों ही मिल जाएगा. पहले लिंक भेज देंगे. क्लास अपलोड होने में गूगल रिकॉर्डिंग है, ये गूगल लंबा सा इसका कुछ कहानी है. मतलब दिस क्लास अपलोड में हम लोगों का नहीं, गूगल को टाइम लगता है 1 आवर का सेशन को फिर से अपलोड करने में. देन ओनली वी कैन डाउनलोड. सो बट आई शेयर यू डायरेक्टली द लिंक. ठीक है, उससे भी आप देख सकते हो. एक सवाल आया है, सर फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है. फॉल्स पॉजिटिव क्या लगता है, क्या है ये? यही है टाइप 1 एरर जो अभी बताया. ओके, गैमलिंग में ऐसा बहुत सारी चीजों को किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल प्ले गैमलिंग विद यू. तो मैं क्या करूंगा, आजकल टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐसे ही किया जाता है. इसीलिए टेलीग्राम में स्टूडेंट लोगों को ना ही इस मतलब से पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करो और कोई ग्रुप के लिए नहीं. तो क्या होगा, आपको एक ग्रुप में मेंबर बनाया जाएगा. 10 रुपए आप खेलेंगे, आपको 20 रुपए मिलता है. फिर आप 20 रुपए खेलेंगे, आपको 100 रुपए मिलेगा. फिर आपको 100 रुपए खेलना है, आपको 1000 रुपए मिलेगा. फिर आप 2000 रुपए खेलेंगे, आपको 2500 रुपए मिलेगा. अब तो पूरा ट्रस्ट आ गया. अब आप 50,000 रुपए, 20,000 रुपए और थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलते मिलते आपका फिर ग्रुप से आप हट जाए. So this is a type of a false positive hope they're giving. In a statistical sense, it becomes a little bit different. So rejecting null hypothesis when it is actually true. So rejecting the true value. Okay. So if you reject the true value, that is more damaging, or getting entrapped into a wrong group, that is more damaging. So obviously type 2 error is much more damaging. Okay. So type 2 is much more, this is a damage level than the type 1 error. तो टाइप 2 एरर को क्या बोलेंगे? फॉल्स नेगेटिव, isn't it? This is a new name. सुना है किसी ने ये नाम पहले? फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव. ओके, गुड. Is it possible that in a data type 1 and type, this is from the DSIM interview question. टाइप 1 DPR में भी ऐसे ही पूछ सकते हैं कि दोनों में स्टैट का तो काफी कुछ है. सो टाइप 1 and type 2 error mixed. Is it possible? हाँ, আর কিছু হলে বলো, স্যার বলে দেবে. क्या ऐसा हो सकता है टाइप 1 टाइप 2 error दोनों आ गए? हाँ भी और नहीं भी. So this answer is very tricky. So if you say that the question they will ask you they will put it in a plate. क्या टाइप 1 टाइप 2 एक साथ खाएंगे या अलग अलग ही खाएंगे? और सर मैं तो दोनों ही सोच रहा हूँ. Okay, it's quite like putting a la carte and a buffet in your marriage ceremony. जिसको जैसे खाना है वैसे खाएंगे. The thing is that type 1 and type 2 error. So it's like rejecting a correct value, accepting a wrong value, and there are 50 values. Maybe for 10 values I have done type 1 error, maybe another 10 I have done type 2 error, and 30 values are cool. So this is a possibility. अब ना क्यों? It is for a single identity. You can't do type 1 error and type 2 error. Answer is ये भी wrong है. This can be done at 2 time frames. Type 1 error and type 2 error is possible for a single data at 2 different time frames. Again, same time, same place, same data, not possible.
same data, same place, different time possible, different data, different same time, same place, very much possible. So type 1, type 2 error can be mixed. Answer is very, very mixed. Okay. So again, there is another concept comes in, which one you try to minimize. देखिए आज जो लोग क्लास कर रहे हैं, मैं पहले बता दूं, जो लोग थोड़ा सा लेट से आए हैं, टुडे माय टारगेट इज टू नॉट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स टुडे, ऑल द डिफरेंट स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स आज या और इसके नेक्स्ट क्लास में भी आई विल कवर अप. ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड फ्रॉम all the different zones I'm trying to cover as much as possible from basic to multivariate. ठीक है, तो चलिए करते हैं. नेक्स्ट पार्ट में है आज का क्लास. आप लोग यू कैन सेव इट. बहुत रेयरली ऐसे सेशंस लिए जाते हैं क्योंकि काफी कुछ चीजें आपको नया पता चल रहा है. ओके, सो नाउ देयर इज अ थिंग कॉल्ड व्हिच एरर विच टू ट्राई टू मिनिमाइज. अब देखो मैंने क्या बोला, टाइप 2 एरर भैया इज मोर डैमेजिंग देन टाइप 1 एरर, isn't it? Type 2 error is more damaging than type 2. So you will try to minimize it. सोचते यही कहता है. But type 1 error is what? What is type 1 error? अभी किया तो rejecting the true value, okay, or accepting the wrong value. So which one is easier to control? Rejection of true value or acceptance of wrong value? Think about it. मतलब मेरा सवाल ये है, हाउ टू मिनिमाइज दिस एरर. ठीक है, द इजिएस्ट वे. तो मैंने एक बार एक इंटरव्यू में एम्प्लॉइज एप्लीकेंट से पूछा कि अगर आप डेडलाइन मिस करेंगे तो क्या होगा, इफ यू मिस अ डेडलाइन ऑफ योर वर्क. तो बोलते हैं डेडलाइन बढ़ा लेंगे, एनहांस द डेडलाइन, ask for enhancement of deadline. That is not the solution. ठीक है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट करता है, बीजेपी गवर्नमेंट क्या करता है, फॉर एग्जांपल इंडिया देख रहा है कि ये इंडिया में 70% लोग, सॉरी ऑलमोस्ट लाइक 60% आर बीपीएल लेवल के टाइप के लोग, सेमी बीपीएल कॉरस्पॉन्डिंग टू. तो हाउ टू इंप्रूव इंडिया सिचुएशन? लोग कहेंगे इन्वेस्ट करो, बाहर से लोगों को लाओ, एजुकेशन, हेल्थ एंड इम्प्रूवमेंट. ये बीजेपी गवर्नमेंट ऐसे नहीं करता. वो क्या करेगा, वो बोलेगा एक काम करो, इस लाइन को ही थोड़ा नीचे कर दे, झमेला ही खत्म. तो 10,000 के अगर सैलरी हुआ तभी आप गरीब हो, अभी से आप 2,000 हुआ तभी आप गरीब है. 2,000 के नीचे हो तब तो बड़े आदमी. So you are no longer garib, and suddenly this percentage falls to 20%. Okay, so this is a very classy way of political scamming, and you feel like, oh, it's cool. Or the same type of scamming is done by Cadbury over the very long span of time. Cadbury हम लोग के साथ यही करते. 10 रुपए का कैडबरी हम लोग बचपन में भी खाते थे, अभी भी 10 रुपए का ही कैडबरी खाते, 20 रुपए का कैडबरी खाते. और इन लोगों ने क्या किया, इतने बड़े कैडबरी को कम करके इतना कर दिया. इट्स लाइक अ सबसेट ऑफ द ओल्ड कैडबरी. ठीक है, तो दोनों कैडबरी अगर पास में रख के देखा जाए, इट्स लाइक इट्स शेमफुली स्मॉल. 5 रुपए का तो दिखता ही नहीं है. दे हैव स्टॉप्ड इट, दे आर गोइंग टू पुट द एक्लेयर एट दैट प्लेस. सो यू गो फॉर अ पर यूनिट स्ट्रक्चर. तो इसको भी मिनिमाइज कैसे करेंगे? देखो, मैं अगर एक्सेप्टिंग द रॉन्ग वैल्यू कर रहा हूं तो मेरा एक्सेप्टेंस लेवल इज वेरी लो, सो एनहांस द एक्सेप्टेंस लेवल. सो दैट इज अ वे ऑफ मिनिमाइजिंग द एरर. सो एनहांसमेंट ऑफ लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस. देखो रॉन्ग वैल्यू एक्सेप्ट कब से होता है? 95% लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, 97% लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, 99% लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ऑलमोस्ट श्योर लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस. तो मैं अगर 95 में मुझे एरर ज्यादा आ रहा है, मैं इसको 97 करूंगा, इसको 99. दिस इज अ परफेक्ट इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन. तो आपको मतलब आप जो भी सर्वे कर रहे हैं, आपका रॉन्ग डेटा आ रहा है, आप क्या करूं? तो सर मैं एक्सेप्टेंस लेवल को ही चेंज करूं. ओके,
कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इसका क्या हो गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने ये बोला, और दूसरे का क्या है, पावर ऑफ टेस्ट, दैट इज 1 माइनस बीटा मींस टाइप 2 है। तो एक टेस्ट कितना पावरफुल है दैट इज डिसाइडेड बाय टाइप 2 एरर। तो अगेन इफ आई एनहांस द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस देन इट विल बी इजियर। लेकिन अगर इतना हाई फाई कर देंगे तो मेरे पास कोई डेटा ही नहीं बचता। रियल लाइफ में क्यों नहीं करते? Why on real life people don't apply this kind of thing in statistics? Why? For example, as a statistical services officer, हमारे हर साल जो स्टूडेंट लोग कैसे क्रैक करते हैं, so they always, जब भी बात होता है we do a statistical अड्डा, इकोनॉमिक अड्डा ऐसे करते हैं, तो बात करते हैं, they come and they discuss their journey. So बोलते हैं सर इस तरीके से अगर if we try to reject all the, for example, there's a loans are coming, loan approvals, okay, सामने में यूको बैंक में पिछले बार में मेरा एक स्टूडेंट रैंक 1 किया था, ठीक है, मेरी वजह से नहीं, खुद की वजह से किया था, एलबीओ का एग्जाम, सामने में एक एलबीओ एग्जामिनेशन आ रहा है, दिस इज लाइक लोन बैंक ऑफिसर, ओके, लोन मतलब मैं तो बोलता ए, लोन से पहले एक ए भी डाल दो, लोन बैंक ऑफिसर, ओके, यू डाई अलोन यू गो अलोन, मतलब कहाँ लोन देने के लिए जाना पड़ता है, एंड लाइक यू हैव टू गो फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ द ग्रामीण बैंक स्ट्रक्चर, ओके, जिसके लिए हमारे क्या नाम है उनका, जिनके साथ अभी हम लोग 36 का आंकड़ा इंडिया का, Mohammad Yunus, he got it for peace, although not for, but the Grameen Bank work was very peaceful work. Okay, although he should have got it for economics. Okay, but sometimes I think did he really got it for peace? Okay, तो ये एलपी ऑफिसर को क्या होता है, लोन को एक्सेप्ट करना होता है कि रिजेक्ट करना। So if he puts the standard so high कि अगर आपका इनकम मंथली 10 लाख के ऊपर होगा तभी आपको लोन देंगे, अरे भाई 10 लाख वाला इनकम वाला आदमी कभी लोन लेने आएगा ही नहीं। So if you want to be too safe, then you end up with not giving any loan. That's the problem of enhancing the acceptance level too high. So type 2 error आता है पूरा 100% कर देते हैं, आपको टेंशन नहीं है, cool. But the biggest issue is then you end up with no data. देखो मेरे पास लोन का कॉल आता है, मैं बोलता हूँ पैसा नहीं है मेरे पास, घर नहीं है, वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है, लोन देंगे बताइए, ठीक है, और मिनिमम 2 करोड़ का लोन लूंगा और भी कैश। तो सामने वाला कहता है क्यों मजाक कर रहे हैं, बोला शुरू किसने किया, ठीक है, सर आपके लिए 5 लाख का लोन है, तुम जानते नहीं हुए डायरेक्टली लोन दे रहे। सो मोस्टली द लोन स्कैम्स आर लाइक दिस, क्लियर? मतलब हम लोग ना स्टैट करते आए हैं, नल हाइपोथेसिस लिखते आए हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखते आए हैं, मतलब मन में एक छवि है, नल हाइपोथेसिस मतलब जो पहले से सब में दिया वो नल, और जो उसका उल्टा होगा वो ऑल्टरनेटिव, ओके, बट इट इजंट लाइक दिस, ओके, नेक्स्ट एरर में चलते हैं। You know, sampling is a very tricky chapter. हम लोग सैम्पलिंग को वही, if you think about the very basics of the sampling का chapter बहुत boring होता है ना? They give a lot of theory and after that some very basic problems. और examination में they ask, means it's like college and university will always try to teach you कि भाई ये है अंडा, इसमें मैगी डालो, मैगी बन गया, या फिर ये है गर्म पानी, इसमें अंडा डालिए और आपका बन गया बॉइल्ड एग। और एग्जाम में आता है बनाइए शाही खिचड़ी with respect to a pint of paprika and how you can make it very saucy and tasty without using any external sauces. Give at least 3 recipes. तुम बना नहीं सकते क्योंकि तुमको तो सिर्फ बॉइल्ड अंडा बनाना आता है, ठीक है, तुम अंडा डालना जानता है, उसके बाद क्या नहीं पता। So sampling distribution is just like making that boiled anda level. So the questions are always hard. Okay, and they will give you, कोई भी book उठा लो, sampling distribution, there is a normal theory comes. They give you a normal theory. Even if you take Gun Gupta, Das Gupta, Porimal Chatterjee, if you take Gupta Kapoor, Kapoor Saxena, Sanchiti, foreign किताबों में 4 स्टार बारों से लेके सब किताबों में यही प्रॉब्लम, ठीक है। So I try to make it a little bit exam oriented. ओके, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है SRSWR और SRSWOR, है ना। इसमें आप लोगों को फिर भी उतना प्रॉब्लम नहीं, यू नो दैट टोटल वैल्यू एंड ऑल,
परमुटेशन किसके लिए लगता है, कॉम्बिनेशन किसके लिए लगता है? With replacement or without replacement? With replacement, every point of time things are falling. That's the permutational structure. This is a P and this is a C structure. Easier to go with this. हर समय के साथ साथ बदलता है. 5 boxes, 5 box to balls to put in a box. तो हर एक बार में एक कम होता है. That's like a very normal become level stats. So now, if I giving the treating the sample mean, पहला क्या error होता है? For example, if you are given a sample mean, treating sample mean as population mean. इतना नहीं है, इतना ये तो बहुत आसान हो गया. Treating sample mean as population mean without variability consideration. ये सुन के अभी थोड़ा टफ लग रहा है, तो ज्यादा कुछ है नहीं. What is this variability consideration? Any idea? सिंपल सा बात है कि सेम पॉपुलेशन से भी मेरा आता है, लेकिन डिफरेंट टाइम फ्रेम में अगर सैंपल्स आते रहेंगे, सो क्या चेंज होगा? What will change? The mean value will change. Even I'm working with the same sample, or rather say same population. If I work with the same population with respect to time frame change, every valuation will be different. Okay. For example, everyone is a student, right? सब लोग आप लोग student हो. But if you see, मैं कभी कभार जब संडेज को घूमने निकलता हूँ सुबह के वक्त, ठीक है, यही मान लो 10-11 बजे अपना, मेरे पास एक डुअल साइकिल है. ओके, 2 लोग पैडल कर सकते हैं. सो मी अनदर प्रोफेसर, मेरा दोस्त है, सो ही इज अ संस्कृत प्रोफेसर. ओके, तो हम दोनों ऐसे डुअल साइकिल लेके इधर उधर निकल पड़ते हैं, बहुत दूर दूर तक चले जाते. So sometimes we go around the Sundays because you know there's a lot of examination happening in all the colleges, schools में. Sunday is not like exam day. और अभी तो हर हफ्ते हो रहा है. ये कुछ हफ्ते पहले कैट था. Now there is a gate. Then there is will be jam. ये सबको छोड़ के भी ऐसे normal banking exams तो हर एक बार. Okay. So if you see that, if you see the student who are preparing for CAT exam, so you see the set of students who are sitting. ये इसका क्या management का कुछ exam. Well, we can guess it. मुझे सबका टाइम टेबल तो पता नहीं, आई डोंट टीच फॉर ऑल कोर्सेज, बट ये तो मैनेजमेंट का. समटाइम्स ये तो यूपीएससी लग रहा है, बहुत सीरियस स्टूडेंट. समटाइम्स व्हेन वी सी ये शायद रेलवे आरआरबी का एग्जामिनेशन, ग्रुप डी लेवल. So even being a professor also, I can't stop myself being a little bit judgmental. It's not that thing how they are dressed, सूट बूट पहन के कोई नहीं आता एग्जाम में, but the face and the confidence which is being reflected through their eyes, I can read that. And my professor friend also can read. His name is Onirban. By the way, आज उसका ये भी है, क्या है, मैरिज एनिवर्सरी. ओके, उन लोगों की वजह से मैंने जाना नहीं हुआ, अलग बात. ओके, सो this is a very important consideration. So this is called the variability consideration. So all are students, but just by seeing on the basis of the parameter, and this is a defined parameter, तो मुझे बोलो सर ये स्टूडेंट को देख के बताइए, नहीं पता. But a set of students, at least n, where n greater than 30, I can at least guess that which examination is happening. Okay, so this is the first biggest mistake. So I can take all the sample mean as population mean, but the same student at the same different point of time can behave very different. अब मान लो इस पूरे डेटा में एक आरआरबी का स्टूडेंट आ गया, वो यूपीएससी देने गया है, लेकिन वो इसके यूपीएससी छोड़ा आरआरबी के लिए भी तैयार नहीं है, कल मूवी देखने गया था, ऐसा स्टूडेंट भी आता. So I cannot judge them, I cannot identify. That is the biggest problem of the sampling distribution. ठीक है, मतलब सैम्पलिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, सर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन सैंपल लेंगे तो पता कैसे चलेगा. एंड सैंपल को फिर लोग क्या बोलते हैं, सैंपल को बढ़ाइए, मतलब 100 में से मैं 10 को ले रहा हूँ, 20 लेंगे और अच्छा है, 30 लेंगे और अच्छा है, 40 लेंगे और अच्छा है. भाई 100 ही ले लो. लेट्स टेक 100 out of 100. That's the biggest thing. So what is the proportion which is most applicable for this sample? This is not defined anywhere in statistics. And if you presume that, only thing you can presume that by यही mean जो मेरा निकला है, यही population का भी mean है. That's the presumptive technique, and that's why we have this sampling error.
in statistics, है ना, which is SD by rooted in some cases, और इसी के लिए सैम्पलिंग का लंबा चौड़ा लिस्ट है. बट मेन प्रॉब्लम वो नहीं है. टाइम टू टाइम सैंपल चेंज होता है एंड वी ओनली प्रेडिक्ट के सब सेम है. क्लियर? दूसरा शायद बहुत आसान मैंने दिया है, स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंस. सो दैट इज कूल, SD by rooted and all. Okay. नेक्स्ट यहां पर मैंने एक लिस्ट बनाया है. दिस इज अ वेरी बिग नो. Misapplying the CLT we have done. ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, एप्लीकेशंस एंड ऑल. अच्छा, एक और चीज, इवन फॉर स्मॉल स्क्यूड सैंपल में भी आप नहीं डाल सकते. स्मॉल स्क्यूड सैंपल एंड CLT bad match. Means you cannot apply a central limit theorem into a concept where the skewness is too less. So मतलब large tail में भी ये नहीं हो सकता and very less skewed data में भी नहीं हो सकता. मतलब if it is a very identical data, there is no point of applying it. Clear? तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम कैसे समझाऊं? सेंट्रल लिमिट थ्योरम उसकी तरह है, इट विल बी अ लिटिल बिट सेक्सिस्ट कमेंट. मतलब उसकी तरह है जिसका मान लो शादी हो रहा है, तो उसको ज्यादा सजाओगे तब भी बदसूरत या बदसूरत दिखेगा या दिखेगी, और बिल्कुल नहीं सजाओगे तब तो बिल्कुल देखने लायक नहीं. तो इसको कैसे सजाए? ओके, कभी कभार होता है ना, अब शादियों में सजता कौन है? दुल्हन ही सजती, दूल्हे को उतना ज्यादा सजाया नहीं है. ठीक है, दैट्स, मैंने आज तक तो अपने जितने दोस्तों का शादी देखा, दूल्हे के लिए कोई मेकअप आर्टिस्ट आ रहा है, उसका हेयर ऐसे हो रहा है. शायद बड़े बड़े लोगों में हो सकता है, हमारे जैसे नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास बंगाली लोगों में या फिर अपने जितने भी अदर कास्ट के भी दोस्त लोग हैं, उतना भी हाई फाई कुछ नहीं. सो इफ आई टॉक अबाउट द ब्राइड हियर, सो सम bride, if you just put in a lot of makeup, she'll look bad. If you don't put a lot at all of makeup, people will say पैसा नहीं, सजाया तक नहीं है. तो लोगों के चक्कर में finding the sweet spot is almost impossible. And they have only said, क्या बोला है कि 30 के ऊपर खर्चा होना चाहिए, 30,000 के ऊपर. You getting the point? 30 means it has to be a large sample. पर कितना large लूं? 31 में चल जाएगा. The very similar concept in economics also, P greater than AVC, average variable cost. That is the point where you, even in the short run में भी आपका अगर मार्केट में जाने से भी फायदा नहीं है, still you can go for it, P greater than AVC. But even in that point, how much? What is the difference? ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से देता हूँ. मींस इन दिस CLTs का एप्लीकेशन, कि मान लो आप जाते हो दुकान, दुकान खोलते हो, दुकान में सारा दिन कुछ भी बिक्री नहीं होता है, आप घर वापस आ जाते हो. फिर जाते हो दुकान खोलते हो, कुछ भी बिक्री नहीं होता है, वापस आ जाते हो. ऐसे मान लो 10 दिन करने के बाद 11 डे में आपको एक कस्टमर मिला जिससे आपको 500 रुपए का फायदा हो. So this assumption is still the first 10 days is zero, and you are only presuming that the 11th day will pay you this. But still, here you cannot apply CLT because N is less than 30. It's not large enough to open another shop. ठीक है, तो इसी के ऊपर एक बेसिक सा सवाल, स्टैट के बाहर वाला ही सवाल है लेकिन स्टैट के अंदर वाला सवाल है. मान लो मुझे खोलना है चश्मे का दुकान. ठीक है, सुंदर सा चश्मे का दुकान. आज 23 जनवरी है, इसीलिए ये चश्मा ड्रॉ किया, समझ ही रहे हो. ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यूज किया हुआ चश्मा है. गांधी जी भी वैसे इससे ही चश्मा इस्तेमाल करते थे. Although this chashma also signifies him, not him. तो ये 23 जनवरी में मैंने सोचा एक चश्मे का दुकान दे दूं. मेरे पास दो ऑप्शन है, बड़ा बाजार में जाके दुकान दूं. बड़ा बाजार इज वेरी फेमस प्लेस इन कोलकाता, इट्स वन ऑफ द मोस्ट. एंड अपने स्मॉल एरिया में ही ऐसे यहाँ पर दूं जहां पर एक भी चश्मे का दुकान नहीं है. Which one I should do? Local area. It's like local. People will say local, right? And the answer is local also. लेकिन यहाँ पर आंसर खत्म हो जाएगा, तो आपको इसमें 10 में मिलेगा 2. Because in short run, when you are starting your business, then in your local area you gain some confidence, you get to know the market, and then only you have the enough capital to invest into this big market.
because at the end of the day, the maximum sales is going to come from this area. But even as a newcomer, तो बोले सर मेरे पास बहुत पैसा है, मैं नया बड़ा बाजार में दुकान दूंगा. Yeah. Then also it's a big mistake. Why? Because there people come in bulk, they purchase. If they don't know you, they don't buy. Because their elasticity is too high. Why do they invest in you? क्यों भाई? तुम कौन हो? भाई मैं अपने दुकान से लूंगा. अपने एरिया के लोगों के पास ज्यादा चॉइस. Okay. So here, although n greater than 30, but the variability is too less for you. And here n is less than 30, but you are the most provider, maximum provider of variabilities in those. The short run, long run, again, time frame. Okay. एक और चीज, ये तो सबसे भयंकर चीज है, इसे कहते हैं डीएफ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. हमेशा का एक लोचा करने वाला चीज. ठीक है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में हम लोगों को क्या बताया जाता है? एक डेफिनेशन दिया हुआ है, गूगल करेंगे, चैट जीपीटी करेंगे, व्हाट्सएप में लिखेंगे तो डेफिनेशन तो मिल जाए. विकिपीडिया में काफी अच्छे डेफिनेशन दिए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा डाइसी है. ठीक है. व्हेन चैट जीपीटी केम आई थॉट वेरी हैप्पी, भाई सोल्यूशन सारे इसी से करवा लेंगे, झमेला खत्म, स्टूडेंट लोगों को भेज देंगे, उन लोग. और कुछ देर बाद पता चला सभी लोगों के लिए फ्री है तो और भी अच्छा है. फिर देखा ये तो सभी कुछ गड़बड़ करने लगा. Okay, I don't know what is going to happen after 5-10 years, but right now, not that effective. ठीक है. तो डीएफ का कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए, बोला है फ्रीडम. फ्रीडम मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब क्या है? सो वेदर आई शुड choose to go and my decision making is completely dependent on my own will. That is called freedom. मुझे क्या कर, मुझे सोना है आज, ऑफिस नहीं जाऊंगा. That's my freedom, right? Although it may cost you a job, that's a different story. But anyway, this is called freedom. And degree means how much freedom you have. तो कैसे पता चलेगा? तो फ्रीडम को कहीं मापा जा सकता है? हो सकता है. मतलब मेरे ऑफिस के अगर कोई एम्प्लॉय होता है तो उनके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 0, क्योंकि मेरे पास लोग ही कम है भाई. एक दिन कोई नहीं आएगा तो मुझे उसका काम करना पड़ेगा, तो मेरे लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0. थोड़ा सा बड़ा ऑफिस में जाएगा, सेमी कॉर्पोरेट, हाई फाई स्टार्टअप, बहुत सारा पैसा मार्केट से निकाला है, सो दिस लाइक ग्रेटर देन 0. इफ यू गो टू अ रिलेटिवली ओके इंडियन कॉर्पोरेट, ग्रेटर देन 0. थोड़ा हाई फाई कॉर्पोरेट, सुपर कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का कॉर्पोरेट है, गूगल में जाएगा तो ऐसा. गुड. सो द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है क्या? सो इट्स लाइक दैट. इफ यू हैव a system which is dependent on an equation system, a plus b plus c equal to 30, and maybe like in a maths way, if I just teach you 2a plus b plus c equal to 90, and b plus c equal to 20, c equal to 10, b plus c plus 2a equal to 75, and then the 4a equal to 95. In that way, if you have, so you can just remove any two of the equation from this, because anyway you have a 5 system. इसमें से 2 को निकाल सकते हैं तो रह क्या जाएगा? 3 है ना. तो here degrees of freedom is 5 minus 3, that is equal to 2. That is your degrees of freedom. So in a system, how many variables you have and how many formational structures are you? So a system is only solvable if the degrees of freedom is greater than equal to 0. सिर्फ हर किताब में लिखा है डीएफ ग्रेटर इक्वल टू 0 में ही सॉल्व होगा, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ही सॉल्व होगा. बट डीएफ नेगेटिव मेक्स इट इनसॉल्वेबल. तो दिस इज द सॉल्वेबिलिटी क्राइटेरिया. तो सेम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सबसे ज्यादा कहां इस्तेमाल होता है? टाई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, है ना. सो आई एम फाइंडिंग द पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर, और मेरा जरूरत है 2 वेरिएबल, तो आई कैन रिमूव एनी वन ऑफ द पैरामीटर एंड यूज इट विद देम. ठीक है. एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 वेरिएबल्स के हिसाब से लेंगे. ये जो लीनियर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी की तरह होता है. इफ आई कैन रिप्रेजेंट दिस फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, सो दैट्स द इजीएस्ट वे टू डू इट. मुझे और कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा. लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, दैट्स द थिंग. दैट्स व्हाई
स्टैट के लोगों को मैं थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स जानने के लिए जोर देता हूँ. दैट्स व्हाई मैथ्स का भी एक स्पेशल सेशन हो रहा है इंटीग्रेशन का. नेक्स्ट ट्यूसडे को है भाई 9 बजे. मुझे याद दिला देना आप लोग व्हाट्सएप करके कि सर वो हम लोगों को करना है. तो वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन पार्ट ओवर देयर. डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल का इस्तेमाल कैसे करना है, स्विचिंग ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है, डिपेंडेंट फैक्टर्स, ये सारे जरूरी है. तो ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. So if you take a random sample, so the degrees of freedom will be decided by this particular scenario. So degrees of freedom has to be positive. Okay. Next. और उसी से confidence interval is also defined, है ना? So confidence interval is what? It's a zone where it will exist. Okay. So this zone can be extended with respect to the acceptability of the data. The kind of example I've given it for the fake टेलीग्राम ग्रुप्स. पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना था, फिर इतना है, फिर इतना है. एवरी टाइम more and more data sets are being introduced and your predictions are correct. Same thing is happening in the world of gambling also. Okay, the first thing you win always. It's not a beginner's luck, it's just luck. तो मैं अपने जिंदगी में एक बार 2 बार कैसीनो गया हूँ. लास्ट टाइम आई वेंट टू नेपाल. ओके, सो नेपाल में कैसीनो में क्या रूल है, 2500 रुपए आप दीजिए, देयर इज अ कपल एंट्री. द सेकंड पर्सन और द फर्स्ट पर्सन वट एवर, मतलब दोनों के नाम से एक, मतलब एक एक का क्या हुआ 1250 टैक्स वैक्स लेके ये कोई 3000 रुपए का. ठीक है. इसमें आपको क्या मिलेगा, डिनर मिलेगा. बहुत हाई फाई कैसीनो में ऐसा होता है. ऊपर में देयर इज अ डांस एंड ऑल, लाइक मूवीज में जैसे दिखाता है ना, एक लड़की डांस कर रही है, फिर ग्रुप आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ग्रुप आ रहा है. ओके. एंड देयर आर लाइक 4 ड्रिंक्स, 8 ड्रिंक, 4 सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब मिला, मतलब इतना कुछ मिल रहा है. एंड द नेम ऑफ द कैसीनो इज डेल्टिन. ओके. हाँ, डेल्टा क्लाउड, आई डोंट रिमेम्बर. तो डेल्टिन में ऐसा है. तो मैं देखा कि कैसीनो में कौन सा गेम्स है मैं जीत सकता हूँ. एंड दे विल गिव यू 3000 रुपीज चिप्स ऑल्सो. 3000 रुपए का चिप्स देंगे. सो द फर्स्ट अगेन द कॉन्फिडेंस इंटरवल प्लेज इनटू दिस थिंग. और 3000 रुपए का चिप मुझे नीचे ही दे दिया. मैं ऊपर जाके सीधा बोला ये कैश करा दो. बोला नो सर, यू हैव टू प्ले, देन दे विल गिव यू अ डिफरेंट कलर चिप एंड उसी को आप एन कैश करा सकते हैं. एंड दिस कैसीनो बिजनेस इंटायरली रन्स ऑन कैश. कोई गूगल पे नहीं चलता. ओके. सो आई डिड इट. तो मैंने देखा ये पूरे गेम में सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, पता है, रूलेट. इवन रूलेट में 2 तरीके से खेल सकते हैं. आई एम टेलिंग यू इन डिटेल क्योंकि आने वाला कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर आधारित है. रूलेट में क्या होता है, ऐसा गोल होता है एक टेबल, और यहाँ पर 1 2 7 ऐसे पूरा एक बॉल ऐसे होता है और सबका ऐसा ऐसे दिया रहता है. मूवीज में सभी लोगों ने देखा. इसमें आएगा हमको नहीं पता. तो इसमें है द स्टेक्स आर टू हाई इफ यू गेस अ नंबर. मान लो मैं 3000 रुपए का, आई गॉट अराउंड 10 चिप्स. ठीक है. तो एक एक चिप का वैल्यूएशन 300 रुपए है. तो मैं अगर इस 2 के ऊपर 300 रुपए खेलता हूँ, इसका शायद 5 गुना 4 गुना, दे आर टेलिंग हाउ मच टाइम्स आई एम गेटिंग. लेकिन एक और भी चीज है जो वो लोग नहीं बताता है. इट्स लाइक इवन वर्सेस ऑड. आइदर इवन नंबर आएगा या फिर ऑड नंबर. सो देयर माय चांसेस ऑफ विनिंग आर वेरी हाई. But I cannot win more. I can only win 1.15 times, 1.25 times as. मुझे तो सिर्फ 3000 रुपए वापस चाहिए क्योंकि मुझे वो चिप को वापस जाके देना है. That's my target because I'm going to get 3000. So my entire evening will be sponsored by Delta. है ना. मुझे अपना शाम को स्पॉन्सर कराना है उससे. हाँ, टू एंड फ्रो जाने आने का भी गाड़ी वो लोग ही दिया. ओके. वो हिली एरियाज पे था. So I always win for even odd, even odd. 4 बार लगातार जीता, 5वें बार में हार गया. Okay, and I end up with around 3150 ऐसा कुछ है. When I trying to end cash it, they are saying नहीं सर, आप थोड़ा और खेलिए. ठीक है. क्योंकि उन लोगों को तो पता चल रहा है ये लोग दिमाग वाले लोग, ये लोग खेलने के लिए नहीं आए, ये लोग फ्री में काम करने के लिए आए. Okay, so my point of the entire discussion is, so if in the confidence interval is too high in the first game, second game, I was going like 4 times, 5 times, then I will go for an extension. Okay. So if you reduce the size of the interval, the winning probability is high.
If you extend the size of the interval, the winning probability is too less. And with a very less winning probability, the stakes are too high. Stakes means price. मतलब पैसा कितना मिलेगा. That is every. Okay. In every statistical analysis, how much you can do it is dependent on the sample value. मान लो sample 100 लोगों का है. मैं अगर 2 लोगों का sample लेता हूँ, मेरे लिए बहुत फायदा है ना? Yes or no? 2 लोगों के sample ले लो, sample size is too small. I can do it with very less amount of money, but there is a very high stake of losing whatever data I will provide to them. That's the wrong data. तो उससे मेरा ऐसे भी statistical services का job जा सकता है. So I will try to enhance this thing into the sweetest spot. अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ. 100 लोगों में से मैं जब काम करता हूँ, so I'm working with 100 people. Okay, it's a very important question. Try to answer this thing. So if I'm working with 100 people, and I'm trying to find a sample size, ठीक है, 100 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, I'm trying to find a sample size, then what will be the large sample size? Is it n greater than 30? समझ में आ रहा है क्यों इतना डेल्टिन का कहानी कहा? The Deltin story comes to this. Statistics में कहा गया है कि greater than 30, लेकिन sample size अगर 100 है तो I am demanding 30% of the entire population, which is a very high number. But if I'm working with 10,000 data, then I'm demanding this 30, there is nothing. So n is 30, means how many times I will play in the casino is not dependent on whether I'm lucky or not. It's dependent on how many amount of chip I have. Although my friend was saying, ठीक है, हम लोग और 5,000 का खरीद लेंगे. We can get some more chips, but our target was not to win or gain some cash. It was to just sponsor the entire trip by the Deltin wala people. Okay. So यहाँ पर में n greater than 30 is invalid. So n greater than 30 बोला है, 30% नहीं. So it's a very specific value has been mentioned. So again, this is a big error in statistics. Okay? You are thinking that 30 is equal to 30%. 30 is equal to 30%. So this is not at all the applicable scenario. Clear? Okay. So this is almost, we have caught up with all the things today. Next week, we will start with the Markov and Chebyshev's inequalities, and this will be a little bit more advanced ones we will be going, and a lot of approximational structures will be going, and even we will be introducing the multivariate structure as well. Okay. Okay, one question I can see. ये थोड़ा फ्लैट सवाल है, फिर भी मैं जवाब दूंगा. सवाल कुछ ऐसा है कि सर सिग्निफिकेंस वाइज, अच्छा मैं शॉर्ट में ये कह रहा हूँ कि पीएमएफ पीडीएफ का डिफरेंस कैसा है. ठीक है, सो ऑब्वियसली पॉइंट वाइज डेटा और इंटीग्रेशन डेटा, मतलब सीधी सी बात है, किताबों में तो यही लिखा रहता है कि समेशन हुआ मतलब पीडीएफ, और ऐसे ये देंगे इंटीग्रेशन हुआ तो पीडीएफ, ये हो गया तो पीएमएफ. बट फिर मन को शांति नहीं मिलती. तो मन को शांति वाला ये है कि अगर मैं बोलता हूं आई एम डीलिंग विद द डेटा एंड द डेटा एग्जिस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एवरीवेयर, there is a certain point and that can exist between this interval anytime. So then we will obviously go for an integration of structure and that will transform the data into a PDF. इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का आ जाता है जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें. ओके, और इसी में ही अगर हर एक पॉइंट में डेटा कैन बी changing its characteristics, and every point wise we can have a separate structural pattern, then we can say what? Then it is called a PM. मतलब हर पॉइंट में यहाँ भी एग्जिस्ट करता है लेकिन कुछ पॉइंट में नहीं भी कर सकते. हर घर जाके, मतलब ये वो एरिया है, मतलब आप सर्वे करने गए हो, हर घर में कोई ना कोई रहता है, ये आप श्योर हो. ठीक है ना? कैसे श्योर हो गए? अगर रात को 2 बजे गए तो घर में आदमी सोने के लिए तो जाएगा ही, लेकिन सुबह 11 बजे अगर जाओगे
तो शायद घर में कोई ना हो, सब ऑफिस चले गए। गेटिंग द लॉजिक? तो इस हिसाब से तो सेल्समैन लोग रात को 2 बजे निकलना चाहिए। लॉजिक ऐसा है भाई, आप लोग तो 2 बजे मिलेंगे तो मैं 2 बजे आता हूँ। जैसे पुलिस कब आता है? रात को ही आता है। तुमको अगर उठाना है घर से, रात को 3 बजे आएगा, ठक ठक कर, कमिंग फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। बस तुम्हारा आधा तो वही खत्म हो गया। ओके, so the logic is you cannot apply the data in accordance to your preferred interval। ये इंटरवल कौन सा है? रात के वाला इंटरवल। यहाँ पर भी तुम अप्लाई नहीं कर सकता, और दिन के इंटरवल में जाओगे तो तुम्हें प्रेफर्ड डेटा ही नहीं मिलेगा। So that's why statistical error always exists. That's why this line will never touch. That's why we get the asymptotic value every time in high level statistics। asymptotic मतलब कि infinity तक जाओ तब जाके ऐसा होगा। So this is the asymptotic structure, isn't it? So this is it for tonight. Now the next session comes in, और आज का जो मैथ्स वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सेशन है, डिफरेंट इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन सेशन, that I will be starting at 8:30 instead of 7:30। This class has been recorded। अगर आपको ना मिले कल तक रिकॉर्डिंग, इस नंबर में ही मुझे पूछना, I will